Hello students and welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. Also do not forget to hit the bell icon for the latest updates. Today we are going to start the first chapter of class 10th physics. So let's begin with the topic light, reflection and refraction. So let us see what we are going to study today. Today we will discuss the topic light, luminous object, non-luminous object, properties of light, how do we see an object, reflection of light, types of reflection, some terms related to reflection, laws of reflection, objects and images, types of images, images formed by plane mirror, properties of images formed by plane mirror, spherical mirror, some terms related to spherical mirror, and also we will discuss the relation between capital R, radius of curvature, and principal focus. Okay, let's start the chapter. So the very first topic we are going to discuss is what is light. Light is a form of energy which enables us to see. लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें देखने में मदद करता है, चीजों को देख पाते हैं हम किसकी वजह से, लाइट की वजह से. अगर लाइट ना हो, अगर हम कभी अंधेरे रूम में चले जाते हैं तो हम किसी भी चीज को नहीं देख पाते हैं, बिकॉज लाइट इज एब्सेंट देयर. ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट, लाइट कुछ चीजें जो है वो लाइट को एमिट करती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो लाइट को एमिट नहीं करती है. ऑन दैट बेसिस वी हैव डिवाइडेड ऑब्जेक्ट्स इनटू टू कैटेगरीज, luminous object and non-luminous object. Okay, now let us see what are luminous object and what are non-luminous object. So luminous objects, those objects which emit their own light. ठीक है, वैसे ऑब्जेक्ट्स जो अपना लाइट खुद एमिट करते हैं, यानी वो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं. Those objects are called luminous object. Here we can see the examples: candles, bulbs, sun. ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो यहाँ पे हमें पिक्चर में दिख रहे हैं, ये सभी चीजें जो हैं वो अपना लाइट खुद एमिट करती है. मींस हम लोग इसको अगर देख पाते हैं तो इनकी ही रोशनी से, इनकी ही लाइट से हम लोग इसको देख पाते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट इज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. ओके, दोज ऑब्जेक्ट्स which do not emit their own light. वैसे ऑब्जेक्ट जिनका अपना लाइट नहीं होता है उसे हम बोलते हैं non-luminous object. Non-luminous object means, for example, here we can say moon. मून का अपना लाइट नहीं होता है, वो सन के रिफ्लेक्शन की वजह से हमें दिखाई देता है. फैन, प्लैनेट्स, इस तरह से हम लोग बाकी आगे और चीजों को डिस्कस करेंगे कि जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका तो खुद का लाइट होता नहीं है, तो वो हमें दिखाई कैसे देते हैं. आगे जो हमारे टॉपिक्स है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ डू वी सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. जो लुमिनस है उसका तो समझ में आता है कि वो उनका खुद का लाइट है, वो हमें इजिली विजिबल हो सकते हैं, बट जो नॉन लुमिनस है वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, वी विल डिस्कस लेटर इन दिस वीडियो. Let's discuss some properties of light. Light हम लोगों ने पढ़ा, what is light? Light is a form of energy. तो उसके कुछ properties होंगे, वो कुछ rules follow करता होगा. So the first property of light is light always propagate in a straight line. Light जो है हमेशा एक straight line में चलता है, ठीक है? It always propagate in a straight line, and that propagation is called rectilinear propagation of light. That propagation is called rectilinear propagation of light. For example, here we can see a picture. यहाँ पे हम लोगों ने 3 cardboard लिया, cardboard A, B and C, and we have put the hole on all of the 3 cardboards at same point. एक ही point पे हम लोगों ने होल किया और फिर उसे एक इस तरह से अरेंजमेंट किया कि तीनों होल जो है कि स्ट्रेट लाइन में आ जाए. तो we can see the light emitted by the candle very easily with the help of these 3 holes. But in case we just shifted the कार्डबोर्ड बी कार्डबोर्ड को हम लोगों ने थोड़ा शिफ्ट किया तो क्या हो रहा है, लाइट जो है वो
टेढ़ा तो ऐसे कवर नहीं कर सकता है ना। वी सी दैट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट दैट इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन नहीं हो पा रहा है, स्ट्रेट लाइन में एक ऑब्जेक्ट आ जा रहा है बीच में, जिसको वो क्रॉस करके वो सीधा नहीं जा सकती। लेटर हम लोग इस बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है, या फिर आप लोगों ने किया होगा पिछले क्लासेस में कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है और ट्रांसलूसेंट ओपेक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोगों ने एक ओपेक ऑब्जेक्ट बीच में रख दिया, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें लाइट जो है वो उससे क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो ये जो हमारी कैंडल लाइट है ये हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो with the help of this example, we can understand that light always propagates in a straight line. So, few more properties of light. The second property is light does not need any material medium for its propagation. ठीक है, लाइट के लिए एक स्पेशल मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। जैसे साउंड होता है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है, अगर साउंड की बात करें हम तो वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। इट मीन्स साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक है, बट लाइट डू नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। इसको ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है इजीली। So the third property, we will see that light waves travel at a tremendous speed of about 3 into 10 to the power 8 meter per second. ठीक है, लाइट का जो स्पीड होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इतना नंबर्स याद करने की आपको जरूरत नहीं है, यू जस्ट रिमेंबर 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है, सभी लाइट्स हम लोग नहीं देख सकते हैं, कुछ ही लाइट्स होते हैं जिनकी वेवलेंथ को हम लोग देख सकते हैं। सो विजिबल लाइट जो होता है उसका रेंज बहुत ही स्मॉल होता है जिस लाइट को हम देख सकते हैं, दैट इज 4 into 10 to the power minus 7 meter to 8 into 10 to the power minus 7 meters। इतनी ही रेंज को हम लोग देख सकते हैं, इससे ज्यादा या इससे कम हम लोग नहीं देख पाते हैं। ओके, लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज बोथ ऑफ वेव एंड पार्टिकल। लाइट के पास जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो वेव नेचर के भी होता है और पार्टिकल नेचर के भी होते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट। पिछले स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा था कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हम कैसे देख पाते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट इट इज ओके, उसमें से लाइट एमिट हो रहा है, वी कैन सी इट वेरी इजीली, बट नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हाउ डू वी सी ए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हियर वी टेक अ पिक्चर, यहाँ से जो सनलाइट जो सन रेज जो है इमिट हो रहे हैं दैट कम्स टू द फ्लावर पॉट। ठीक है, फ्लावर पॉट इज अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, इट डू नॉट इमिट इट्स ओन लाइट, सो इट इज अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये फ्लावर पॉट जो है इसमें जो रेज इससे आ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय इट। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर के जब ये हमारे आईज में ये रिफ्लेक्टेड रेज एंटर करते हैं देन वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इट इज नॉट ओनली फॉर द फ्लावर पॉट, एनी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट इज सीन बाय दिस फेनोमेनन। जब भी कोई सन रेज जो होते हैं या फिर एनी लाइट, एनी सोर्स ऑफ लाइट, इट मे बी कैंडल, इट मे बी बल्ब, बस वो सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए जो उस पे फॉल कर रहा है। अंधेरे में चीजों को नहीं देख पाते बिकॉज लाइट इज नॉट फॉलिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं फॉल कर रहा है तो हम लोग उस चीज को, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग नहीं देख पाते। यहाँ पे क्या है कि हमारा जो सनलाइट है वो फॉल कर रहा है इस फ्लावर पॉट पे, और जो फ्लावर पॉट है दैट इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट। ठीक है, लाइट को जब रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो रिफ्लेक्शन जब हमारे आईज में जाता है, ठीक है, तब उस चीज को हम लोग देख पाते हैं। हम लोग अपनी सीधी की चीज, अपने सामने की चीजों को देख पाते हैं, सिर्फ अपने से जो सामने है वो चीज को देख पाते हैं, बिकॉज उसी से जो लाइट है, बिकॉज लाइट इज ऑलवेज ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इसलिए हम लोग अपने सामने की चीजों को ही सिर्फ देख पाते हैं, हमारे पीछे की चीजों को नहीं देख पाते। ठीक है, तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सो यहाँ पे भी जो लाइट फॉल कर रहा है इस फ्लावर पॉट पे, ये सीधा जो है इसकी रिफ्लेक्शन जो है हमारे आईज पे पड़ रही है, सो दैट वी कैन सी द फ्लावर पॉट हियर। Okay, what is reflection of light? The bouncing back of light after falling on any surface. किसी भी surface पे अगर light fall कर रहा है और उससे
बाउंस करके बैक जा रहा है, इट इज सेंट बैक आफ्टर falling on any surface, then that phenomenon is known as reflection of light. ठीक है, the bouncing back of, बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है, the bouncing back of light after falling on a surface is known as reflection of light. Here we consider a mirror. यहाँ पे हम लोगों ने एक मिरर को कंसीडर किया है जिससे रिफ्लेक्शन को हम लोग शो कर रहे हैं. ठीक है, तो मिरर में यहाँ पे क्या है कि इंसिडेंट रे, लेटर वी विल डिस्कस व्हाट इज इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. सो जो लाइट फॉल कर रहा है दैट इज इंसिडेंट रे. ठीक है, जो लाइट फॉल कर रहा है, सपोज ये रे जो है आकर के मिरर पे फॉल किया एट पॉइंट ओ. ठीक है, पॉइंट ओ पे अगर ये फॉल कर रहा है, दैट एट फ्रॉम सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पे वो जो है वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है. ठीक है, तो क्या होगा, मिरर में हम लोग किसी भी लाइट रेज को जब फॉल कराते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज सेंट बैक, एंड दिस कंप्लीट फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इस फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. Now let us see what is regular reflection. The reflection which occurs on smooth surface, वैसा reflection जो किसी smooth surface पे occur करे, just like mirror, plate, या फिर in other word we can say the reflection which produces a reflected image. ठीक है, वैसा surface जिसमें reflected image बनता है, जिसमें हम अपनी image को देख पाते हैं, such type of reflection is known as regular reflection. For example, reflection in mirror, plate, still water, etc. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने और एक चीज देखा इस फेनोमेनन में. In the case of regular reflection, the incident rays are parallel. Incident rays means the rays falling on the surface. ठीक है, वैसे rays जो surface पे fall कर रहे हैं, those rays are called incident rays. So incident rays are parallel to each other and also the reflected rays are parallel to each other. ठीक है, incident rays भी parallel होंगे और reflected rays भी एक दूसरे के parallel होंगे. Such type of reflection are called regular reflection. ठीक है, the reflection which occurs on a smooth surface is called regular reflection. What is diffused reflection? The reflection which occurs on uneven surface. Uneven surface means just like our body, trees, table, ये सारी जो चीजें हैं जिसमें images form नहीं होते, ठीक है? This type of reflection is called diffuse reflection. The reflection which occurs on uneven surface is called diffuse reflection. For example, reflection on table, trees, human body. Okay, this type of reflection in which no image is formed is known as diffuse reflection. यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे incident rays तो parallel आ रहे हैं. Incident rays are coming parallel, but after reflection they are no more parallel. ठीक है? In such cases, incident rays which are coming parallel, which are falling parallel on the surface, they just fall parallel, but they reflected back. They are reflected back in non-parallel way. Such type of reflection is known as diffuse reflection. They do not form any reflected image. Okay, in diffuse reflection, image is not formed. So they are called diffuse reflection. Let us see some terms related to reflection. Some terms related to reflection. The first term is incident ray. The ray which falls on the object. वैसा ray जो object पे fall कर रहा है. For example, let us suppose this is an object and this ray is falling on it. ठीक है, ये ray जो है इस पे fall कर रहा है. So the ray which falls on the object, that is called incident ray. इस ray को हम लोग क्या कहेंगे? Incident ray. Incident point. The second term is incident point. The point where the ray falls. वो पॉइंट किसी सरफेस पे जहां पे रे जो है फॉल कर रहा है. यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे जो रे फॉल कर रहा है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इंसिडेंट पॉइंट. Third one is reflected ray. The ray which is sent back after falling
on the object, ठीक है, ये रे जो है fall कर रहा है, and when it is sent back after falling on any object, जब ये वापस जा रहा है, इसे वापस भेज दिया गया या फिर बाउंस कर दिया गया, that ray is called reflected ray. ठीक है, the ray which is sent back after falling on the object is called a reflected ray. The fourth term is normal. What is normal? The perpendicular line drawn at the point of incidence and reflection. ठीक है, जैसे हम लोगों ने लिया, it is the incident ray and it is reflected back, so it is the reflected ray. What is normal? The perpendicular line drawn at the point of incident and reflection. यहाँ पे जो point of incident या जिसको बोल सकते हैं जहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है लाइट या फिर रिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है, उस पॉइंट पे जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. The perpendicular line drawn at the point of incidence and reflection is known as normal. Incident angle, or we can say angle of incidence. Okay, incidence. So the fifth point is incident angle or angle of incidence. The angle between the incident ray and the normal is called incident angle or angle of incidence. Okay, here let us draw. It is a mirror. It is a mirror, and we have an incident ray, and we have also drawn here a normal. So the angle between incident ray and normal is known as angle of incidence, and it is represented by small I. Now let us see what is reflected angle. The angle between the reflected ray, it is the reflected ray, the angle between the reflected ray and the normal, the angle between reflected ray and normal is called angle of reflection, or we can say reflected angle. ठीक है, let us understand all the terms related to reflection with the help of a diagram. So it is the incident ray. According to definition, the ray which falls on the surface is known as incident ray. यहाँ पे ये जो रे है इस पे फॉल कर रही है और इस रेज को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे. The next one is reflected ray. The ray which is sent back after reflection, after falling on any surface, that is known as a reflected ray. वो रे जो the ray which is sent back after reflection from any surface, or we can say the ray which is sent back after falling on any surface, that ray is known as reflected ray. Now next term was normal. The perpendicular line drawn at the point of incidence. The perpendicular line drawn at the point of incidence or reflection is known as normal. Next term was angle of incidence. The angle between the incident ray and normal is known as angle of incidence, and the angle between the angle between the reflected ray and normal is known as reflected angle. So our next topic is laws of reflection of light. It is very important topic for your board examination. We have two laws of reflection. The first law is the incident ray, the reflected ray, and the normal lies on the same point. It is very easy. पहले भी हम लोग इसको देख चुके थे कि जो इंसिडेंट रे होता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों रेज जो होते हैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं. दे लाई ऑन अ सेम पॉइंट. ठीक है, वेरी इजी लॉ. द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम plane. Next,
Second law of reflection. Second law of reflection. The angle of reflection is always equal to the angle of incidence. The angle of reflection is always equal to the angle of incidence. इसमें क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि we all know that what is angle of incidence. The angle between the incident ray and normal is called angle of incidence, and angle between the reflected ray and normal is known as angle of reflection. So यहाँ पे जो according to second law, we saw that angle I is always equal to angle R. ठीक है, सपोज अगर कोई रे जो है वो 30 डिग्री के एंगल पे फॉल कर रही है, इट मींस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, देन here according to second law of reflection, angle of reflection will be 30 degree. ठीक है, it is always equal to the angle of reflection. ठीक है, angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Now let us know what are objects and images. We will clearly understand what is the difference between an object and an image. Okay, anything that gives out light rays are called object. For example, books, copies, tables, those anything that emits light or reflects light, that is called an object. But what is an image? It is an optical appearance. Okay, it is an optical appearance. They are not real, they are just optical appearance, they appear to be there. When light rays coming from an object are reflected from a mirror, ठीक है, किसी मिरर से या फिर किसी भी लेंस से अगर लाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और उसकी वजह से जो ऑप्टिकल अपीयरेंस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एन इमेज. Or in other word, we can say the point where two or more than two rays meets after being reflected from any surface. किसी भी surface पे से अगर कोई object जो है वो reflect हो करके उससे जो rays बाहर आ रही है वो जहाँ पे meet करे, that is called an image. Now here we see that images are of two types, real image and virtual image. Okay, now let us know what are the differences between a real image and virtual image. The image which can be obtained on screen, वैसा इमेज जिसे ऑब्टेन करने के लिए, जिसे हमें देखने के लिए स्क्रीन की जरूरत हो, स्क्रीन रिक्वायर्ड हो, उस तरह के इमेज को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज. फॉर एग्जाम्पल, इमेज फॉर्म्ड ऑन प्रोजेक्टर. प्रोजेक्टर पे जो हम इमेज देखते हैं दैट इज रियल इमेज, क्योंकि उसके लिए हमें स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे. वर्चुअल इमेज, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, वैसा इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है. जैसे हम लोग मिरर में अपने आप को हर रोज देखते हैं, तो वो जो इमेज बनता है दैट इज वर्चुअल इमेज. इट डज नॉट रिक्वायर any screen for its formation. Okay. Now let us see how images are formed by a plane mirror. How images are formed by a plane mirror. Let us suppose it is you and it is your virtual image. Now how the image is formed by a plane mirror? The rays coming out from you, आप पे कोई रेज जो है सोर्स ऑफ लाइट से जो है रे फॉल कर रही है एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम योर बॉडी. ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करने के बाद दैट रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मिरर. इस मिरर के सरफेस पे वो रिफ्लेक्शन फॉर्म करेगा एंड ड्यू टू दैट रिफ्लेक्शन योर वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन द मिरर. ठीक है, उसी रिफ्लेक्शन की वजह से वो जो रेज आपकी बॉडी से रिफ्लेक्टेड बैक हो रहे हैं, दोज रेज मीट्स एट अ पॉइंट. ठीक है, दोज रेज मीट्स एट अ पॉइंट टू फॉर्म योर इमेज. They do regular reflection with the help of mirror and they form the image of yours on the mirror, beyond the mirror, and it is of the same size as it is a plane mirror.
Further, we will see that mirrors can also change the shape and size of images. But plane mirror के केस में क्या होता है कि object size is always equal to the size of image. Okay, object distance, suppose it is 1 meter. ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस. अगर आप मिरर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं तो आपकी इमेज भी जो होगी दैट विल बी 1 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर. ओके, नाउ we will see what are the properties of the images formed by a plane mirror. So properties of the images formed by a plane mirror are: A plane mirror forms a virtual image. पीछे हम लोगों ने देखा plane mirror जो है वो always it forms virtual image. Next one is the image formed by plane mirror is erect. Erect means सीधा, means अगर आप सीधे खड़े हैं तो आपकी इमेज भी सीधे आएगी. अगर आप उल्टे खड़े हैं, अपने सर को नीचे और पैर को ऊपर करके खड़े हैं, तो भी आपकी इमेज जो होगी वो उसी तरह से आएगी. इट मीन्स द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इरेक्ट. थर्ड वन इज द इमेज फॉर्म्ड as far as behind the mirror as the object is in the front of it. अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हम मिरर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं, then our image will be also 1 meter far away from that mirror. The size of image formed by a plane mirror is equal to that of size of object. If our height is 5.1 inch, 5.2, 5.6, then our image will be also of the same height. Okay? The image is laterally inverted. It means that our left hand appears to be right in the mirror image. Okay? Our left hand appears to be right and right hand appears to be left in the mirror. मिरर में जब हम भी देखेंगे तो हमारी राइट हैंड जो लगेगी दैट विल बी अपियरिंग लेफ्ट एंड लेफ्ट हैंड विल अपियर राइट. So our next topic is spherical mirrors. A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass. Let us suppose a hollow sphere made up of glass. यहाँ पे हम लोगों ने माना कि एक hollow sphere है, it is made up of glass, और we cut this hollow sphere in this way. ठीक है, हम लोगों ने इस hollow sphere को इस तरह से cut कर दिया. ठीक है. Then what happens if we silver or polish the outer surface? If we polish the outer surface and its reflecting surface becomes inward, then concave mirror is formed. And if we polish the inner surface, and its reflecting surface is outward, then it forms convex mirror. ठीक है, हॉलो स्फेयर है जिसका सेंटर जो है वो सी है. ठीक है, हॉलो स्फेयर की सेंटर जो है वो सी है और उसे हम इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए. ठीक है, हॉलो स्फेयर को इस तरह से 2 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने के बाद 2 अलग अलग कुछ इस तरह के शेप हम लोगों को मिलेंगे. तो अगर हम लोगों ने उसे आउटवर्ड पॉलिश किया और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ट रखा, देन इट विल फॉर्म कनकेव मिरर. अगर हम लोगों ने उसे इनवर्ट पॉलिश किया और उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटवर्ड है, देन इट विल फॉर्म कन्वेक्स मिरर. लेट अस नो व्हाट इज कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर वन बाय वन इन डिटेल्स. Concave mirror. The mirror in which the reflection of light takes place in the bent-in surface. Bent-in surface means जो ये अंदर की तरफ जो है इनवर्ड जो है इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज इनवर्ड. लेट अस सपोज यहाँ एग्जांपल हमारे पास है एक स्पून का जो इनर सरफेस होता है जिससे हम किसी भी चीज को उठाकर खा पाते हैं, दैट इज कनकेव सरफेस. ठीक है, दैट इज concave surface. The mirror in which the reflection of light takes place at the bent-in surface is known as concave mirror. You can remember
the mirror in which the reflection of light takes place at the bulging out surface. ठीक है, outer surface पे जो bulg out कर रहा है just like this, इसकी polished surface कौन सी है? Inward. तो reflecting surface कौन सी होगी? Outward. ठीक है, तो such type of mirror is known as convex mirror. The mirror in which the reflecting surface is bulging out surface. Okay, the reflection happens in bulging out surface. That is called convex mirror. Now let us know some terms related to spherical mirror. The first term is pole. The center of the spherical mirror is called pole. It is represented by P. The center of spherical mirror is called pole and it is represented by P. Here we can see the pole. Here we can see the pole. It is the center of the mirror. In concave mirror, here we can see, here it is the pole, and its convex mirror also we can see the pole. Now, what is center of curvature, or we can say radius of curvature? The center of the sphere of which the spherical mirror is a part. ठीक है, sphere अभी हम लोगों ने देखा spherical mirror is the part of a hollow sphere. ठीक है, तो जो hollow sphere है उसका कोई तो center होगा, and that center is called center of curvature. Suppose it is a hollow sphere and we have cutted two part like this. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसे एक कन्वेक्स मिरर बना लिया और यहाँ पे हम लोगों ने इसे एक कॉन्केव मिरर बना लिया. ओके, देन this center of which the spherical mirror is a part. Okay, the center of the sphere of which the spherical mirror is a part is called center of curvature. It is represented by capital C or capital R. Now let us see what is principal axis. The line joining the pole and the center of curvature. The line joining the pole and the center of curvature is called principal axis. Aperture, the circular area that determines the amount of light falling. In other words, we can say the reflecting area. Okay, aperture, we can say the reflecting part or reflecting area of a mirror is known as aperture. The circular area that determines the amount of light falling on a mirror or a lens is its aperture. वो circular area जो determine करता है कि कितनी light जो है वो mirror या lens पे fall करेगी, that is aperture. In other words, we can say the reflecting part of the mirror is known as aperture. Next topic is focus. The point on the principal axis where the parallel rays coming from infinity falls or seems to be falling. These 2 points we can easily understand with the help of picture. Let us see. First you note down all the terms and we will understand again it by the help of a diagram. Okay, for the notes you can join my Telegram channel. You will get there the PDF version of my notes. Okay, let us understand the terms related to spherical mirror with the help of diagram. The very first term was pole. The center of the spherical mirror is called pole. Here we can easily see the pole. It is the point at the center of the spherical mirror. It is represented by capital P. The next term was center of curvature. What was its definition? The center of the sphere of which the mirror is a part. ठीक है, उस स्फेयर का सेंटर, जिस स्फेयर का जो मिरर है हमारा वो एक पार्ट है. ठीक है, उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. ठीक है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट. अगर हम यहाँ पे इस डॉटेड लाइन को ज्वाइन कर दें देन इट विल फॉर्म अ हॉलो स्फेयर. ठीक है, हॉलो स्फेयर हो जाएगा. देन इट विल आल्सो हैव अ सेंटर.
and that center is known as center of curvature. Center of curvature for the concave mirror is on left side, and for convex mirror is on right side. Okay, diagrammatically we can say that it is on right side and it is on the left side. Now the next term was principal axis, the line joining the pole and center of curvature. ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड principal axis. Center of curvature is also known as radius of curvature. Now the next term was principal focus. What is principal focus? According to definition, the point on the principal axis where the parallel rays coming from infinity, infinity means infinite distance, we don't know the distance. Okay, so the parallel rays coming from infinity meets or seems to be meeting, either they meets or they appears to be meeting, is known as principal focus. One thing also here is that concave mirror is also known as converging mirror. Why it is so? Because the parallel rays coming from infinity, they converge at a point, that point is called focus, they converge at the focus. So the concave mirror is known as converging mirror. In the case of convex mirror, the parallel rays which are coming from infinity, they diverges in different direction. ये different direction में diverge कर जाते हैं, अलग अलग spread कर जाते हैं. So it is called diverging mirror. Okay, it is called diverging mirror. The rays are not actually meeting at the focus, they appears to be meeting, they seems to be meeting here. Okay, now let us know what is the relation between focal length and the radius of curvature. Yes, easily we can see here focal length is equal to 1/2 into r, that is radius of curvature, or in other words we can say twice the focal length is equal to the radius of curvature. Twice the focal length. What is focal length? The distance between pole and focus. The distance between pole and focus is known as focal length. So here we can say twice the focal length is equal to radius of curvature. Let us understand this with the help of a numerical. So the question is, a concave mirror is made by cutting a portion of a hollow glass sphere of radius 24 centimeter. So the radius of curvature of a spherical mirror is given 24 centimeter. Okay, it is given 24 centimeter. We have to find the focal length of that mirror. We have to find the focal length of the mirror. We will use the formula. What is the formula? F equal to R by 2. R we have provided here. We have been provided here R, that is 24 centimeter. So the focal length of that mirror is 24 centimeter by 2, that is 12 centimeter. Thank you very much for watching.